अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। शॉक के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस करने हैं आज, क्योंकि फ़र्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिक शॉक? ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड हार्ट रेट. Option B, vasodilation and increased blood flow to tissues. Option C, tachycardia and vasoconstriction. And D, decreased respiratory rate. Answer C correct है, tachycardia and vasoconstriction. Question number 2 है, in septic shock the most significant cause of circulatory failure is? Option A, decreased blood volume. Option B, myocardial depression. ऑप्शन सी, वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन, या फिर ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिक साइन ऑफ शॉक? हाइपोटेंशन, बी टैकीकार्डिया, सी वार्म फ्लश्ड स्किन, डी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। आंसर सी, warm flushed skin. Question number 4, which of the following compensatory mechanisms occur in response to shock? Increased blood flow to kidneys, decreased heart rate, increased secretion of antidiuretic hormone, decreased systemic vascular resistance. Option C correct है, increased secretion of antidiuretic hormone. Question number 5, which type of shock is characterized by inadequate blood flow due to severe blood or fluid loss? Option A, cardiogenic shock. Option B, obstructive shock. C, hypovolemic shock. या फिर D, neurogenic shock. आंसर C करेक्ट है, hypovolemic shock. Question number 6 है, the most important common cause of cardiogenic shock is severe blood loss, myocardial infarction, septicemia or severe dehydration. Option B is correct, myocardial infarction, as we have already discussed in our previous lectures. Question number 7, in the progression of shock, which stage is characterized by severe hypotension that does not respond to fluid resuscitation? Option A, compensatory stage. Option B, progressive stage. Option C, irreversible. Or D, initial stage. Answer B is correct, that is progressive stage. Question number 8, the hallmark of obstructive shock is? A, decreased venous return to heart. B, decreased cardiac output. C, increased systemic vascular resistance. Or D, increased central venous pressure. Option A correct है, decreased venous return to heart. Question number 9, which of the following lab finding is commonly observed in patients with septic shock? Option A, high white blood cell count. B, decreased lactate levels. C, normal blood glucose. Or D, elevated serum albumin. Answer A is correct, that is high white blood cell count. Question number 10, the early signs of neurogenic shock include? Option A, hypothermia and bradycardia. B, fever and tachycardia. C, hyperthermia and increased blood pressure. Or D, hypotension and tachycardia. Answer A is correct, that is hypothermia and bradycardia. It was all the MCQs of our first unit shock. Hope it will help. Okay, मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.